Good morning, students. I hope you all are doing well as it's a fresh day and we'll be starting with a fresh poem and it is related to stars. So let's just begin with this beautiful and amazing poem. So let's just begin. So the title of our poem is Come Down Little Star. हम स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, that is Come Down Little Star, and read and enjoy this interesting poem. और हम लोग इसको read करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मजे करेंगे. So come down little star and tell me what you are. Come down little star, छोटे सितारे please नीचे आओ and tell me कि आप क्या हो, what you are, आप हो क्या. I love you little star, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. Will you tell me what you are? क्या आप मुझे बता सकते हैं आप एक्चुअली में क्या हो? What आप एक्चुअली में हो कौन? क्या हो? I can see you up there. मैं सिर्फ आपको ऊपर आसमान में देख सकता हूँ. Can you see me down here? क्या आप मेरे को नीचे देख सकते हो? Basically, it is saying कि आप मुझे आसमान में बैठ के नीचे से देख सकते हो. You are up in the sky. आप कहाँ हो? Sky के पास हो, sky के ऊपर हो. देखिए ये up जो है ना, it's a preposition, right? Which is linking with the sky. And देख सकते हैं हम यहाँ पे in भी लगा हुआ है, right? I cannot jump so high. He's saying that I cannot jump so high. मैं इतना high jump नहीं कर सकता हूँ. And I don't know why. और मुझे नहीं पता क्यों. We can see यहाँ पे so लगा हुआ है. This is an adverb, right? देखिए high क्या है? High is basically high, low. ये these all are the verbs like right. और उनके पीछे जो उनकी क्वालिटी बता रहे हैं so high, मतलब वो high होने की भी क्वालिटी बता रहे हैं कि high भी होते हैं, कितना ज्यादा होते हैं. तो बेसिकली इट्स टेलिंग द क्वालिटी ऑफ वर्ब, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एडवर्ब. नाउ द बर्ड्स टू यू कैन नॉट फ्लाई, और जो बर्ड्स हैं वो इतना ऊपर तक फ्लाई नहीं कर सकती. कैन नॉट द बर्ड्स टू यू कैन नॉट फ्लाई ओवर हियर, कि बर्ड्स जो हैं वो स्टार्स तक फ्लाई नहीं कर सकती हैं, राइट. यू जस्ट कम डाउन लिटिल स्टार एंड टेल मी व्हाट यू आर, और प्लीज मुझे बताओ कि आप कौन हो. एंड वी कैन सी देयर इज अ वर्ड रिटन इज एनोनिमस. एनोनिमस का मतलब ये होता है दैट द राइटर ऑफ दिस पोएम, द वन हु हैज कंपोज दिस पोएम, इज एक्चुअली अननोन. वी डोंट नो कि ये किसने कंपोज करी है. Moving on to the word basket, the first word is star. Star is a heavenly bodies जो आसमान में होती हैं. Basically, they are the celestial bodies, right? The next is jump. Jump means to hop. Moving on to the oral exercise where we'll be learning that how to pronounce each word correctly. That is, the first word is down. The next word is star. Moving on to the next is jump, right? Then the next is sky. Then it's little, and then it's cannot, then it's of course it's high, and then moving on to the last is fly. Moving on to the correct answers, the child calls down the what? That is the little stars. And the little stars, they are twinkling in the sky. And the opposite of up is down. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑपोजिट लिखा हुआ है. इस ऑपोजिट को हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज एंटोनियम्स, राइट. जैसे कि पर्यायवाची को हम सिनोनिम बोलते हैं और विलोम शब्दों को हम एंटोनिम्स बोलते हैं, तो इसलिए ऑपोजिट लिखा हुआ है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द कंप्लीट द लाइंस. द फर्स्ट इज कम डैश स्टार, दैट इज कम डाउन लिटिल स्टार. Right, and tell me what you are. I dash star, that is I love you. I love you little star, right. Will dash are, that is will you tell me what you are. Right, and I dash why, that is I don't know why. The birds dash fly, that is the birds to you. See, the birds to you cannot fly. It means that the birds, they cannot fly up to that high level of the sky, right. वो आसमान को इतना ऊपर नहीं उड़ सकती हैं. आसमान को इतना ऊपर उड़ने वाले जो birds रहते हैं, they are different. They belong to different varieties, right. Come dash star, that is come down little star. Right, and tell me again, you have to tell me what you are.
Moving on to the answer the following question, you all will be doing all these question answers in your respective notebooks. And I hope you all like this beautiful poem. Basically, it was anonymous and it was all about stars, that how the poet is imagining. We don't know who is the poet, but he is imagining that how stars, they are looking towards us from the upper level of the sky, because they are so high, and at this earth, we are residing at earth, and we are just looking towards the sky and looking these beautiful stars, they are twinkling. I hope you all also like that stars, they twinkle in the sky, and you enjoy, love seeing this. And please keep studying and stay hydrated. Thank you.